हे गाइस, अगर आपका ऑप्शनल पॉल साइंस है और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले से ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको कौन सी बुक्स रेफरेंस करना है ये अगर समझ नहीं आ रहा है, कौन से चैप्टर्स फॉलो करना है ये अगर समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमने खास आपके लिए बनाया है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पूरा सिलेबस मालूम होना चाहिए। उसके लिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन हमें पहले डाउनलोड करना है और वहाँ से हमें पूरा सिलेबस देखना है। हमने यहाँ पे सिलेबस और उसका डिटेल्स और इसके साथ कौन सी बुक्स कौन से पार्ट के लिए फॉलो करना है वो दिया है। तो यूपीएससी का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें है पार्ट 1 और पार्ट 2। उस पार्ट 1 में फिर से पार्ट ए और पार्ट बी है और पार्ट पेपर 2 में पार्ट 1 और पार्ट बी ऐसे। तो चलो पेपर 1 पार्ट ए वो है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी बाय O.P.GAUBA। ये पूरा कवर करता है जो डिटेल्स है, उसके कंसेप्ट्स है, हमें कौन से फॉलो करना चाहिए। और यहाँ सबसे जो हमारा सिलेबस जो दिया गया है उसे पॉइंट वाइज दिया गया है। इसका मतलब हमें क्या फॉलो करना है ये हमें ओवरव्यू हमारे नोटिफिकेशन से सिलेबस हमें देखकर मिलता है। तो हमें वो सिर्फ देखना है पॉइंट्स और वो सिलेबस पूरी तरह से हमें इस बुक से कवर करना है। पॉलिटिकल थ्योरी में इस बुक्स को हम जो पढ़ेंगे तो पूरी थ्योरी, उसकी मीनिंग, अप्रोचेस और थ्योरीज ऑफ स्टेट्स और जो अलग अलग थ्योरीज है वो हमें इसमें से उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। हमें इससे वो कंप्लीट करना चाहिए। एंड देन अनदर वन इज़ अ बुक बाय राजीव भार्गव, पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें से हमारी कंसेप्ट लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें फॉलो करना चाहिए रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, देन इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, एंड देन राइट्स, उसके थ्योरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी में क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, उसमें से अलग अलग थ्योरीज है जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, उसके कंसेप्ट्स, उसकी थ्योरी और जो अलग अलग थिंकर्स है जिन्होंने जो अपने थॉट्स उन्होंने रखे हैं और उसके क्रिटिसिज्म, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उस थॉट्स और उसके क्रिटिसिज्म दोनों भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। क्योंकि जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो उसे क्रिटिसाइज या क्रिटिकली एनालाइज या फिर नोट्स ऐसे होते, तो हमें प्रोज एंड कॉन्स वो दोनों लिखना चाहिए। उसके लिए भी हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। देन अनदर वन इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए है, बट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए दूसरा एक बुक्स हम आगे बताएंगे, वो फॉलो करना बेहतर होगा। अगर इससे बेहतर वो फॉलो करो। देन फॉर आइडियोलॉजीज देर इज़ अ बुक बाय एंड्रू हेवुड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही अच्छा बुक्स है। इसमें हमें मार्क्सिज्म, फेसिज्म, फासिज्म, लिबरलिज्म, गांधीज़म, ये पूरे आइडियोलॉजीज है, उसकी कंसेप्ट्स ये हमें क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए अनदर सोर्स है MPS 001 जो कि इग्नू का बुक है, एंड अनदर वन इज़ राजीव भार्गवा। सो हमें पूरे आइडियोलॉजीज क्लियर करना चाहिए, उसी को भी इसी तरह करना चाहिए। उसके क्रिटिसिज्म और उसके थेरीज, उसके जो थिंकर्स है उनके थॉट्स वो हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके लिए द बेस्ट बुक इज़ V.R.MEHTA, लेकिन इसमें स्टोरी टाइप दिया है, हमें वो स्टोरी समझना चाहिए वो जिस तरीके से दे है। उसमें से अगर हमने नोट्स बनाए तो भी अच्छा होगा, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करना, या फिर सुब्रा रंजन मैम के नोट्स उन्होंने वहाँ पे अच्छी तरह से दिया है तो हम वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये स्टोरी अगर हम रीड कर गए तो ईजी हो जाएगा ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड द अनदर वन बुक इज़ बाय इग्नू, उसमें भी हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक्स है जैसे कि MPS 03, MPS 01, वो भी हम देख सकते हैं। बट उसके लिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ये बुक फॉलो करेंगे जब
इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय V.R. मेहता। और किसी क्लासेस के नोट्स को भी फॉलो करो, वो भी अच्छा होगा। उसमें से थिंकर्स लाइक B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय एंड धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, उसमें से थॉट्स अच्छी तरह से दिए, व्यवस्थित से देख लेना। एंड द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वन ऑफ द बेस्ट बुक इज बाय सुबरता मुखर्जी, दैट बुक वी हैव शोन हियर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर मार्केट में कोई भी बुक देख लो तो इससे कोई अच्छा बुक मिलेगा ही नहीं शायद। एंड उसके लिए और एक है O.P.GAUBA का, बट उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं, बस इसे फॉलो कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द थिक बुक एंड इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, बट स्टडी करने के लिए शायद ये बुक अच्छा है। उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन मिल, मार्क्स, ग्राम्सी एंड हन्ना अरेंट। सो हमें जो यूपीएससी का जो फोकस एरियाज है, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, J.S. मिल, तो हमें इसको डिटेल्स में देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा बुक्स है, इसे फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। एंड द पार्ट बी इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसके लिए बिपिन चंद्र का बुक्स ये बहुत ही अच्छा है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, militant and revolutionary movements, peasants and worker movements, then perspective on Indian national movements, liberal, socialist, Marxist, radical humanist and Dalit। तो इसे हमें डिटेल्स में देखना चाहिए। जो राइटर्स के जो व्यू है उसके साथ हमें हमारे व्यूज़ भी ऐड करना चाहिए। ये बुक हमें एज अ पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको हमें सामने रख के पढ़ना चाहिए, नॉट एज अ हिस्ट्री बुक। तो अगर उस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारे भी कुछ व्यूज़ बन जाएंगे। तो हमारे व्यूज़ अगर हम यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में रखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर आवर स्कोरिंग। एंड देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर दुर्गादास बसु। ये बेस्ट है। और अगर इसके साथ अगर हम लक्ष्मीकांत को भी ऐड कर दें तो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हार्ड है और लक्ष्मीकांत वन ऑफ द ईजी लैंग्वेज। अगर हमारा लक्ष्मीकांत कवर है तो D.D. बासु का बुक्स हमें कवर करने के लिए इजी हो जाता है। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस, देन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें कवर करना है। then principal organism union government and the structure of polity, ये हमें यहाँ से पूरा कवर करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। जैसे कि हम जीएस के लिए लक्ष्मीकांत ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, एनसीईआरटीज हम कवर कर चुके होते हैं, तो ये पढ़ना इजी हो जाता है। देन फॉर concepts of democracy, federalism, the book is by B.L.FADIA, Indian Government and Politics, but it is not a necessary, क्योंकि हमारे D.D. बासु या लक्ष्मीकांत से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम इस बुक्स को जा सकते हैं इन डिटेल, नहीं तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, पंचायती राज, यूनियन पब्लिक सर्विस, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। ग्रास डेमोक्रेसी, पंचायती राज, म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स, देन फेडरलिज्म, स्ट्रक्चर्स, ये हमको यहाँ से कवर करने के लिए इजी हो जाता है। एंड देन फॉर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट्स, जैसे कि सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये हमें यहाँ से कवर करने के लिए मिल सकता है। या फिर हम अगर न्यूज़पेपर से कवर करें, और उसमें उस न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। हिंदू के भी अच्छे हैं, बट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड इन इंडियन एक्सप्रेस। सो फॉलो इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट।
and that is for chapter paper first. Now let's move to paper second, that is comparative politics and international relation. For comparative politics, we can follow IGNOU books. Comparative politics में nature of politics, political economy, political sociology perspective, and limitations of comparative method. And then state in comparative perspective, characteristic of changing nature of state in capitalist and socialist economics. जसे की पहिले state was following liberalism, but that concept was negative. Now state is a social democracy, means the role of state is now in positive. So that we have to study in comparatively what changes have been taken place, what are the pros and cons of the any system that we are following. Then politics of representation and participation, political parties, pressure groups. Pressure group, one of the hot topics. There is a every year questions, so we have to look at it in detail. Then social movements, that we have to cover from IGNOU books. And then the books is Does the Elephant Dance, that is for Indian foreign policy. So we can see that for our foreign policy. For globalization, responses from developed and developing societies, and approaches to study of international relations, जैसे कि idealist, realist, Marxist, functionalist, and system theory. That are the views of different scholars. We can study it in detail. Then concepts of international relation, like power relations, national interest, security, transition actors, collective security. So that we can see here. Then in changing international political orders, like rise of superpowers, the hegemon, strategies and ideological bipolarity. Now the hegemony of US has been almost declined because of the other actors like China, India, Russia. They are now playing major role. And the threat to globalization by the third actors like terrorism, and challenges by some states like North Korea. So that we can study in foreign policy. Then collapse of Soviet Union, unipolarity and American hegemony, that is almost declined, but we have to see that in details. From we can follow this book, or from world history we can get the details perspective of that rise today's foreign affairs. So that is for it. And then for international economic systems like WTO, IMF, and third world demand for new international economic orders, globalization of world economy. For that we can follow IGNOU books and United Nations agencies, and regionalism, like the groups of European Union, ASEAN, APEC. So you can study that in detail. We can study that in notes of some classes, or any books of there are books of IGNOU books of MA and BA for pol science. You can study in detail from there. And the contemporary global concerns for democracy, human rights, environment, gender, justice, terrorism, and nuclear proliferation. And the book The Globalization of World Politics, ऑक्सफोर्ड एडिशन बुक है ये, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी टाइप बुक्स है. So you can see in details for India's foreign policy, and South Asia as a free trade area, India's look east policy. For that we can follow the history books, like the modern history books. There we can get the perspective of that policies. And for the global politics, there is a book by ANDREW HAYWOOD. We can follow the global organizations like UN,
United Nations organizations, other bodies, that we can study here. India and global south, relation with Africa, Latin America, with Europe, and the changing relations of India with other countries. Now we have focus of Africa, focus on African countries. India is taking major initiative for developments in African countries, so that we can study here. And India's relation with other rising powers like China, Russia, Japan. The security and India's demand for the UNSC, South-South cooperation, and nuclear question. And recent development in India's foreign policy, India's position on recent crises in Afghanistan, Iraq, West Asia, growing relation with US, Israel, and vision of a new world order, so that we can study under global politics. So that book is best, we can follow it. And I have already said that Indian polity is must if you are preparing for any competitive exams, because it is a base for the polity. Already we have covered it for our GS section, so if we have not covered, we can cover it in detail in bit. And we have also started a series for the Lakshmikant polity, you can follow there also. And you can, it is usually takes 15 or 20 days to cover that book. It is a thicker one, but if we give a special timing for Lakshmikant, you can get the detail of polity. And then another one we have already said that D.D.BASU, so that is a important one. We can get in details, we can go in depths of polity in D.D.BASU. So after Lakshmikant covering, we can follow D.D.BASU book. So that is for polity, if that is polity optional subject. And for the optional, we have to follow the Indian Express editorial and the Hindu's editorial and specific editorials of some writers, that when there is some important issue of any writer, we will discuss it. So follow us and keep studying. Thank you for today's lecture. We will continue another chapter, means another topic, in another lecture. Thanks.